Now we will start with chapter 7, section 34, application for setting aside the arbitral award. The application is made before the court against the arbitral award, and it is for setting aside the award in accordance with subsection 2 or subsection 3. subsection 2 में क्या है, arbitral award कब set aside कर सकती है कोर्ट, अगर तो if party is making application establishes on the basis of the record of the tribunal that party was under some incapacity or agreement is not valid, or there was no proper notice and unable to present his case, or the matter was beyond the scope of the submission of arbitration, or the composition of tribunal was not in accordance with the agreement of the parties. And B, the court finds that the dispute is not capable of settlement by arbitration, or the award was in conflict with the public policy of India. Conflict with public policy की explanation दी हुई है हमें. It is said to be, the award is said to be in conflict only if it was made or induced or affected by fraud or corruption, or in contravention of fundamental policy of Indian law, or in conflict with the basic notions of morality or justice. और ये जो फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ है, इसकी भी आगे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है that it shall not entail a review on the merits of the dispute. Okay, then subsection section 34 section 2a, other than international commercial arbitration, award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award, but the award shall not be set aside merely on the ground of erroneous application of law or reappreciation of evidence. Okay, तो ये हो गया. उसके बाद subsection 3, application for setting aside may not be made after 3 months has elapsed from the date the party had received the arbitral award, and this period can be further extended by 30 days but not thereafter. मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करने सेट असाइड करने के लिए, और वो 3 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं हम फॉर 30 days बट नॉट मोर देन दैट. ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द कोर्ट में where it is appropriate adjourn the proceeding for the time being to give tribunal an opportunity to resume the proceeding and eliminate the grounds for setting aside the award. Application after issuing a prior notice to the other party, and the party shall making an application shall file an affidavit that he has served the notice to the other party before filing application. And subsection 6, application under this section shall be disposed of within a period of 1 year from the date on which notice is served upon the other party. Okay, ये हो गया 34 में एप्लीकेशन थी. 35 है 35 और 36 फाइनलिटी की बात करता है आर्बिट्रल अवार्ड की. 35 इज सेइंग दैट आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम. ठीक है, तो फाइनलिटी एंड बाइंडिंग आ गई 35 में, किसके ऊपर, पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम. 36 में इन्फोर्समेंट है अवार्ड की. अगर विद इन टाइम सेक्शन 34 की एप्लीकेशन नहीं फाइल हुई है, देन द अवार्ड शैल बी इन्फोर्स्ड जस्ट एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, एंड एप्लीकेशन शैल बी and in case application is filed under section 34, then it shall not itself become a stay on the award. Rather if courts order the stay of operation of award on a separate application made for that purpose, only then the award's enforceability will be stayed, and upon filing of application for stay of award, the court may grant stay of operation of such award on reasons recorded in writing. देन सेक्शन 37 आ जाता है, अपील की बात करता है. 34 में एप्लीकेशन फाइल की थी फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर. 37 में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स है. ऑर्डर कौन से ऑर्डर्स, अपील नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर लॉ, अपील फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड फ्रॉम नो अदर्स. मतलब जो इस सेक्शन में लिखे हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल होगी एंड नॉट एनी अदर. और अपील कहाँ फाइल होएगी, टू द कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री ऑफ द कोर्ट. मतलब अगर जिस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम जा रहे हैं उस कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट जहाँ अपील जाती है वहीं ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपील जाएगी. ऑर्डर कौन कौन से हैं, रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8, जिसमें हमने कहा था स्टे कर सकते हैं और आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं. सेक्शन देन इज सेक्शन 9 में ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट एनी मेजर कौन सा, इंटरिम मेजर, और सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34. फर्दर अपील शैल ऑल्सो लाई टू द कोर्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल एक्सेप्टिंग प्ली ऑफ सेक्शन 16
और ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 16 में था जहाँ कोर्ट अपनी ही जुरिस्डिक्शन पे डिसीजन लेती है, और 17 में इंटरिम मेजर्स जहाँ ट्राइब्यूनल देती है. देन subsection 3 of section 37 that no second appeal shall lie from an order passed in appeal but nothing shall affect the right to appeal to supreme court. अगर तो एपलेट कोर्ट की जो डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट कोई सेकंड अपील नहीं है, लेकिन राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 10 मिसलिनियस, जो कि सेक्शन 38 से लेके 43 तक जाता है. 38 है डिपॉजिट्स, दैट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में फिक्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज एन एडवांस. जब को ट्राइब्यूनल के पास केस आता है तो उसमें वो पार्टीज़ को कह सकते हैं कि डिपॉजिट कराने के लिए, अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए एज एन एडवांस फॉर द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द आर्बिट्रेशन, एंड इट में फिक्स सेपरेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर द क्लेम एंड काउंटर क्लेम. The deposit shall be payable in equal share by the parties, and provided that if one party fails to pay his share, the other party may pay that share, and provided that where the other party also does not pay that share, then the tribunal may suspend or terminate the proceedings in respect of such claim or counter claim. Upon termination of the proceedings, the tribunal shall return the unexpended balance to the parties. Then 39 lien on arbitral award and deposits as to cost. Tribunal shall have lien on the award for any unpaid cost to arbitration. That is, अगर तो एक तो पहले ही फिक्स अमाउंट था, डिपॉजिट करा लिया एज एडवांस फॉर कॉस्ट फॉर द क्लेम और काउंटर क्लेम. ठीक है. और 39 में है कि अवार्ड दे दिया है बट कुछ कॉस्ट पे अनपेड हैं, तो उसको अवार्ड पे लियन एक्सरसाइज कर सकती है ट्राइब्यूनल. And if in any case the tribunal refuses to deliver its award except on payment of cost पेमेंट के अलावा किसी और वजह से अगर रिफ्यूज़ कर देती है ट्राइब्यूनल अवार्ड देने को, देन द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ ऑर्डर द ट्राइब्यूनल शेल डिलीवर द अवार्ड on payment into court by the applicant of the cost demanded, and after inquiry the court may pay the amount to the tribunal as determined by it, and return the balance to the applicant. Application under subsection 2 and shall be made by party unless the fees demanded have been fixed by written agreement between him and the arbitral tribunal. Then section 40, in case of death of a party to the arbitration agreement, the agreement shall not be discharged. In that event, it shall be enforceable by or against the legal representative of the deceased. The mandate of arbitrator shall not be terminated by death of any party by whom he was appointed. Nothing in this section shall affect the operation of any law by virtue of which any right of action is extinguished by the death ऑफ अ पर्सन. अगर डेथ की वजह से राइट ऑफ एक्शन ही ख़त्म हो जाता है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होएगा. अदरवाइज़ अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो एग्रीमेंट किसके अगेंस्ट इन्फोर्सिबल होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट. 41 बात करता है अगर कोई पार्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, देन इफ़ द रिसीवर अडॉप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट देन द एग्रीमेंट शैल बी इन्फोर्सिबल बाय और अगेंस्ट हिम. एंड इन केस when a person who has been adjudged as insolvent before the commencement of proceeding become party to arbitration agreement, and any matter to which agreement applies is required to be determined in connection with the insolvency proceedings, then the subsection 1 does not apply. Any other party or receiver may apply to judicial authority for order directing the matter in question to be submitted to the arbitration. Receiver here includes official assignee. Then section 42 jurisdiction की बात करता है that notwithstanding anything contained elsewhere, where with respect to arbitration agreement any application has been once filed in a court, then that court alone shall have jurisdiction over arbitral proceedings and all subsequent application arising out of that agreement and in no other court. तो अगर एक बार एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया रिगार्डिंग एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देन आगे की फर्दर सारी प्रोसीडिंग्स और एप्लीकेशंस जो है वो उसी कोर्ट में फाइल होंगी और किसी कोर्ट में नहीं होंगी. देन सेक्शन 42A और 42B ये 2019 अमेंडमेंट्स हैं. 42A क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आर्बिट्रेशन में आएगी वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेगी. 42B प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये प्रोटेक्शन किसको दी है, आर्बिट्रेटर को. उसके बाद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को. देन 43 है दैट लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू आर्बिट्रेशन एज इट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट.
ये क्वेश्चन हो सकता है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता आर्बिट्रेशन में, तो ये होता है। एंड आर्बिट्रेशन शैल बी डीम टू हैव कमेंस्ड ऑन द डेट रेफर्ड इन सेक्शन 21 में कौन सी डेट रेफर की हुई थी, जिस दिन नोटिस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द अदर पार्टी टू रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। उसके बाद सबसेक्शन 4 वेयर द arbitral award is court order that arbitral award be set aside the period between the commencement of arbitration and the date of order excluded in computing the time period prescribed for the limitation act। ये हमारा हो गया फिनिश आर्बिट्रेशन एक्ट पार्ट 1। अब हम इसको एक फटाफट रिवीजन दे लेते हैं फ्रॉम द इंडेक्स, ठीक है। लेट्स जस्ट अ मिनट, we will be revising from my notes। Section 3 receipt of communication not apply to written communication in respect of proceeding of judicial authority, it shall be deemed to if delivered to addressee personally or place of business or habitual residence or mailing address। 4 points, okay। and communication shall be deemed to be received on the day it is delivered। सेक्शन 4 वेवर की बात करता है। इफ़ नॉलेज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट और any requirement of agreement and the parties shall still continue with the arbitration proceeding without raising an objection within the prescribed time, then it shall be deemed to have been waived his right to raise the objection। in section 5 judicial intervention extent not that judicial intervention shall not be allowed except where provided in this part। and कहाँ कहाँ provided है, section 8, section 9, section 11, 14 subsection 2, 27, 34 and 39 subsection 2 यहाँ पे allowed है, बाकी और कहीं intervention allowed नहीं है। then section 6 administrative assistant can be taken by the tribunal with the consent of the parties। उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है जिसमें सेक्शन 7 है, 8 है और 9 है। चैप्टर 2 किसकी बात करता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफाइंड है, 8 में रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय जुडिशियल अथॉरिटी, 9 में इंटरिम मेजर बाय कोर्ट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, सेक्शन 7 में डिफाइंस एग्रीमेंट एज एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship whether contractual or not। it may be in form of clause in agreement or separate arbitration agreement। it shall be in writing and it shall be in writing if it is document signed by the parties or exchange of letters etc providing record of that agreement or it is claimed by one party and not denied by the other party। then section 8 where an application by any party before submission of statement on substance of dispute and there exists an arbitration agreement, then the court shall refer case for arbitration unless prima facie it is of the view that the agreement is not itself valid। section 8 subsection 2 appointment application accompanied by original arbitration agreement or the certified copy thereof and arbitration can commence while application is still pending before the court, ठीक है। सेक्शन उसके बाद सेक्शन 9 है इंटरिम मेजर बाय कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 कहता है वेयर इंटरिम ऑर्डर इज मेड एंड नो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग येट कमेंस दैट इट शैल कमेंस विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर। 9 subsection 3 if arbitral proceedings already initiated court will order under section 9 only if satisfied that section 17 remedies inefficacious। okay then उसके बाद हमारा आता है हमारा चैप्टर 3 जो कि कहता है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल। सेक्शन 10 से सेक्शन 15। सेक्शन 10 में है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बट इट शैल नॉट बी एन इवन नंबर। इफ नो एग्रीमेंट देन it shall be sole arbitrator। if MMTC limited केस में था if agreement mentions even number of arbitration then it will not render agreement void but it will be treated as a ट्राइब्यूनल विद सोल आर्बिट्रेटर। उसके बाद सेक्शन 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है, इट शैल बी ऑफ एनी नेशनलिटी फ्री टू एग्री द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट parties if agreed the procedure but could not be followed then procedure as under section 11 subsection 4 and if not agreed then in case of 3 arbitrators procedure then each party shall appoint 1 arbitrator then 2 appointed arbitrators will appoint 3rd arbitrator। if not agreed within 30 days the party
make an application for appointment by arbitral institution who shall be designated by Supreme Court or High Court, and Supreme Court in case international commercial arbitration, High Court in case other than international commercial arbitration. And if the procedure could not be agreed and it was a sole arbitrator, then procedure under section 11 subsection 5, that is if parties fail to appoint anyone within 30 days of request of other party, then same procedure as under 11 subsection 4, जो कि ये है. उसके बाद है if appointment by arbitral institution, then in the section 11 subsection 8, before such appointment inquiry shall be made by the institution by asking for disclosure in writing by the prospective arbitrator about his qualifications, his interest, etc. Then request, if request is made to more than one institution, then request made to the first one will have the authority, and in case application for appointment of arbitrator is made, then it shall be disposed of within 30 days of the service of the notice on the opposite party. उसके बाद आता है सेक्शन 12 जो कहता है ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज. सेक्शन ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज हमारे पास 3 है. फर्स्ट है सर्कमस्टांसिस आर सच दैट अराइज डाउट ऑन हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर. सेकंड is not possessing qualification agreed by the parties, and third is he is related with the parties as per the 7th schedule, that is person become ineligible as to be appointed as arbitrator. However, parties may waive this objection under this subsection by express agreement in writing after the dispute has arisen. And section 13 में challenge का procedure है, और एक सेक्शन 12 में ये भी लिखा है कि पार्टीज कैन चैलेंज ओनली फॉर रीजंस ऑफ विच दे बिकेम अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. अब चैलेंज का प्रोसीजर है सेक्शन 13 में. पार्टीज मे एग्री अपॉन द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14, दैट इज चैलेंज ओनली ऑन ग्राउंड्स which he became aware after appointment. Then parties may agree on the procedure of challenge. If it may be agreed, it may not be agreed. If not agreed, then within 15 days of becoming aware, parties present written statement of challenge to arbitral tribunal. If the arbitrator withdraws or agrees to the challenge, then it shall terminate his mandate, and if he does not withdraw, then tribunal shall decide. If challenge not successful, then arbitration proceedings shall continue and award is given by the tribunal, and against this award application is filed under section 34 for setting aside. If it is set aside, then court decide whether the fees to be paid or not to the arbitrator. तो ये हो गया सेक्शन 13. इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 14. सेक्शन 14 कहता है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, it result in termination of tenure and substitution of new arbitrator. क्यों होता है फेलियर और impossibility to act? इसका कॉज है डी जूरे और डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, और he withdraws from his office, or agreement among parties to terminate the arbitrator. If he withdraws, it does not mean that grounds of section 12 have been agreed upon by him. Okay. Then as per section 15, as per section terms applicable to earlier arbitrator, hearings previously held may be repeated. However, previous orders are not deemed invalid merely because of new arbitrator is appointed. इसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर 3. चैप्टर 3 था 10 से 15 तक. अब हमारा आता है चैप्टर 4 जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 16 और सेक्शन 17. सेक्शन 16 को हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं. सेक्शन 16 में क्या है? कॉम्पिटेंस ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिसाइड ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, ऑब्जेक्शन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. फॉर दिस पर्पस आर्बिट्रेशन क्लॉज डीम्ड टू बी सेपरेट देन द एग्रीमेंट. Then, and even if contract is null and void, it does not entail ipso jure invalidity of arbitration clause. When to raise the objection? Before submission of statement of defense if objection with respect to jurisdiction. If objection with respect to authority, then as and when dispute of exceeding its authority arises, the party shall raise the objection. However, if delay is justified, can also entertain delayed objection. On the objection decision, it has jurisdiction. Proceed with the arbitration, make award. Then section 16 subsection 6 है aggrieved may file an application under section 34 for setting aside. In section 17 interim measures by arbitral tribunal only during the pendency of arbitral proceeding. ये 2019 में चेंज किया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग ही हम सेक्शन 17 में ट्राइब्यूनल से इंटरिम मेजर मांग सकते हैं. एंड ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 17 इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 37.
enforceable under CPC as if it were order of the civil court. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 18 से लेके 27 तक चैप्टर 5 जो कि है कोर्ट कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. 18 में है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, बोथ पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी. 19 में है दैट ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय CPC और एविडेंस एक्ट. पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड द प्रोसीजर. 20 में प्लेस पार्टीज आर फ्री टू एग्री और इफ नॉट एग्रीड choice of tribunal after having regard to circumstances of the case or convenience of the parties. 21 में commencement of proceeding unless otherwise agreed deemed commenced on the day when request for referring the dispute given to the respondent. 22 language parties are free to agree or if not agreed choice of tribunal. Also all documents must translated in that language. 23 statement of claim and defense. Claimant and respondent submit their claim and defense. Defense also includes set of and counter claim along with relevant document. Amendment in the statement is allowed during pendency of proceeding unless arbitrator deems it unnecessary. Then 23 subsection 4 ऐड हुआ है 2019 अमेंडमेंट से, जिसमें है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस shall be completed within 6 months from the date when the arbitrator received in writing his appointment letter. 24 hearing and written proceedings. The hearing shall be oral proceeding except if barred by parties in agreement. Adjournment shall be granted with the cost which shall be exemplary cost. 25 is default of parties. In case claimant fails to submit the claim within time, then the proceeding shall be terminated. If respondent fails to file his defense, then the tribunal shall proceed without his defense and it shall not be deemed to be that he has admitted the claim. 26 expert appointment on the order of the tribunal. 27 court assistance in taking evidence by the tribunal or by party with the tribunal's approval. एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि कोर्ट असिस्टेंट लेने के लिए. ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है सेक्शन 28 से स्टार्ट होके 33 तक जाता है जो कि है चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग. 28 में पहले हम रूल्स एप्लीकेबल देखेंगे. ट्राइब्यूनल को लॉ कौन सा एप्लीकेबल है टू सबस्टांस ऑफ द डिस्प्यूट वेयर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया. देन इन केस ऑफ domestic arbitration substantive law as in force in India. In case of international commercial arbitration, parties designated some country, substantive law of that country. In case parties does not designate any country, then the rules as arbitral tribunal thinks necessary will be applied to the tribunal. 28 subsection 2 tribunal can decide if expressly authorized by the parties the dispute by ex equo et bono, that is from equity and conscience, or as amiable compositor. 29 decision shall be by the majority among the panel of arbitrators. However, question of procedure may be decided by the presiding officer. 29A the time limit for arbitral award. In case of domestic arbitration, it shall be within 12 months of completion of proceeding. It can be extended by parties for further 6 months and after that extension by court on an application made by the parties. If delay due to arbitral tribunal, court may order reduction of his fees. Court may also order substitution of arbitration and the endeavour shall be made by the court to dispose of this application within 60 days of service of notice. ये हो गया domestic arbitration में. And in case of international commercial arbitration, the arbitrator award as expeditiously as possible and endeavour award within 12 months of completion of proceeding. अगर तो डोमेस्टिक है then shall complete within 12 months, and in case of international commercial arbitration endeavour to complete it within 12 months. This 12 months can further be extended by 6 months and further by the parties and then further by the court on an application. If award is made within 6 months from entering the arbitral tribunal, then he shall be given an additional fees. and third में extension of time by parties जो हमने यहाँ पढ़ा है. उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय कोर्ट हो गया. फिर आता है 29B जो कि कहता है कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की बात करता है. इट मे बी एग्रीड बाय द पार्टीज इन राइटिंग बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर टू डिसाइड द डिस्प्यूट इन बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. देन नो इसके फीचर क्या है दैट नो ओरल हियरिंग इज रिक्वायर्ड. डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ
written pleadings, document submissions before the tribunal, no technical formalities, may call for additional documents if required. Award is made within 6 months from the date tribunal enters upon reference. Then delay in award, same process as under section 29A subsection 3 to 9, जो कि है further extension होती है, then कोर्ट के थ्रू होती है वो सब. Then section 30 settlement outside arbitral tribunal. Tribunal settlement is made outside the arbitral tribunal via mediation, conciliation, etc. at any time during the proceedings are ongoing. 30 subsection 2, if it is settled, dispute is settled, then arbitral proceedings shall be terminated, and if requested by parties, the tribunal may award on agreed terms, same status as the other award. 31 form and content of award, it shall be in writing, signed by the members of tribunal, signed signature of majority sufficient if reason of the missing members is given. Reasoned award unless agreed by the parties that no reason is required, or award under section 30 जो कि settlement है, then shall state the date and place of arbitration, signed copy of order delivered to the parties. Award for payment of money, tribunal may include interest also, unless award otherwise direct. Award shall carry interest at the rate of 2% higher than the current rate of interest. Cost of arbitration fixed by tribunal from date of award to the date. Cost of arbitration fixed by tribunal, ये जो interest at the rate of 2% है, higher than the current rate of interest, it shall be from the date of award to the date of payment. 31A cost of proceeding, court or tribunal decide who will pay the cost. Cost कौन सी, जो सारी litigation की cost है, it must be it means reasonable cost. When to be paid, how much will be paid. General rule is that cost shall follow the event, that is unsuccessful party order to pay the cost to the successful party. Then section 32 termination of proceeding, कब terminate होती है, 4 rounds है. Final award is made or claimant withdraws his claim, or agreement between parties for the termination of the proceeding or continuation of proceeding unnecessary or impossible, जैसे कि section 14 में grounds थे जो. उसके बाद 33 में है एडिशनल अवार्ड, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड. एडिशनल अवार्ड के है कि रिक्वेस्ट बाय पार्टी विद इन 30 days of receipt of award where some claim presented in the proceeding but omitted in the award, then tribunal if considered justified it shall make an award, additional award within 60 days of receipt of the request. एंड करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए इसमें भी रिक्वेस्ट बाय पार्टीज विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ अवार्ड फॉर करेक्शन ऑफ क्लरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अवार्ड. देन ट्राइब्यूनल कंसीडर रिक्वेस्ट जस्टिफाइड शेल डिसाइड द रिक्वेस्ट विद इन 30 days of the its receipt. Such correction and interpretation shall form part of the award. इसके बाद हमने पढ़ा ही अभी चैप्टर 7 रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड मेड बिफोर द कोर्ट. ग्राउंड्स 34 2A में है और 2B में है. 2A में है पार्टी मेकिंग एन एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस ऑन बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्राइब्यूनल दैट पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी, agreement was invalid, party not given proper notice, deal with dispute, not refer to arbitration or composition of tribunal not in accordance with the agreement, or court finds that the subject matter of the agreement is not capable of settlement by arbitrator, or award is in conflict with public policy only if award by fraud or corruption, or award in contravention of fundamental policy of Indian law or in conflict with basic notions of morality or justice. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद सेक्शन 34 सब सेक्शन 3 में है टाइम लिमिट फॉर चैलेंजिंग द अवार्ड. इट शैल बी विद इन 3 months एक्सटेंडेबल अप टू 30 days मोर. नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी इवन इफ सफिशिएंट कॉज इज प्रेजेंट. Then 34 subsection 6 time limit for deciding the application of section 34. ये तो टाइम लिमिट फॉर चैलेंजिंग द अवार्ड. ये है टाइम लिमिट फॉर ट्राइब्यूनल टू डिसाइड द एप्लीकेशन. endeavor shall be made with to decide within 1 year from the date of notice of application served to the opposite party. It is not strict. endeavor shall be made. ठीक है. Then no setting aside merely because erroneous application of law और रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, ये कोई ग्राउंड नहीं है सेट असाइड करने के लिए. राइट टू गेट द अवार्ड सेट असाइड इज स्टैट्यूटरी, अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड. उसके बाद है चैप्टर 8 सेक्शन 35 और 36 आते हैं जिसमें फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड है. 35 इज सब्जेक्ट टू पार्ट 1. आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम. 36 में है enforced as if decree of civil court after time under section 34 expired, or application for stay of arbitral award
while application under section 34 is pending before court, unless application not filed for stay order, arbitral award remain enforceable and no automatic stay if application under section 34 is filed. देन चैप्टर 9 है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, जिसमें सेक्शन 37 है. 37 क्या कहता है कि अपीलेबल ऑर्डर्स बताएं इसमें कौन से हैं. अपील बिफोर कोर्ट सेम एज ऑथराइज, कोर्ट कौन सी, सेम एज ऑथराइज टू हियर अपील इफ सेम अवार्ड would have been passed by a civil court. Order कौन कौन से हैं. Orders under section 8, under section 9 made by court granting or refusing the interim order. Order under section 34 setting aside or refusing to set aside the award. Order under section 17 interim relief grant or refused by tribunal. Under section 16 subsection 2 or 3, that is decision on jurisdiction of the tribunal. Then appeal if made, then on the decision of the appeal no second appeal shall be made against the decision. However, right to appeal before Supreme Court still present. Then ये हो गया हमारा. अब इसके बाद हमारा लास्ट मिसलिनियस बचता है सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 43 तक, जिसमें 38 डिपॉजिट्स की बात करता है. डिपॉजिट्स कौन से, एज टू एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड बाय द arbitral tribunal and it shall be equally contributed by both the parties. 39 lien on arbitral award. In case the cost have not been deposited, then the tribunal has a right to lien on the award. Section 40, arbitration agreement not to be discharged by death of the party, rather it shall be enforced against the legal representatives of the party. 41, provision in case of insolvency. In case of insolvency, the agreement shall be enforceable against the official receiver of the party to the agreement. 42 is jurisdiction of the court before which once an application is filed, then all the other applications and the proceedings regarding that arbitration shall be conducted before that court only and no other court. Limitation Act shall apply to the tribunal proceedings. 42A हमारा था confidentiality का, और 42 था protection for action taken in good faith. ठीक है, ये हो गया हमारा ख़त्म. Thank you very much.